अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म केसरी 2 के लॉन्च के मौके पर पहुंचे हैं खुद अक्षय कुमार, जो एकदम फॉर्मल अवतार में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ वहां पर अनन्या पांडे और करण जौहर भी नजर आए। To answer your question, never. In fact, there are various times that I've heard stories that are true stories of valor and bravery, of unsung heroes, of stories embedded in the archives of history that haven't been portrayed on celluloid. It took me back to a few instances, a few stories that came on my table, and I immediately reacted. The very first film was Razi. I still remember the brave story of Sehmat, who actually fought an unsung battle, a story that you did not hear of. Razi went on to kind of prove that true stories that resonate so gorgeously, beautifully, and bravely, just like Razi did, can truly strike a chord with an audience globally. Ghazi attack that came again, which was related and linked to Razi in a certain sense, because they both dealt with the same intel that actually made us win a war, a battle. Kesri, the very first Kesri, the brave battle of Saragiri, where actually 21 valiant and brave Sikh soldiers fought till the evening, a battle that people thought would end in seconds and minutes, but went on till the evening because of the bravery, the valor. And then this absolutely outstanding story of C. Shankaran Nair, based on the book, The Case That Shook the Empire, a man who actually nearly brought the reputation of the crown down, literally to their knees. A battle we didn't know about. We knew the massacre, but none of us knew the truth, that behind the scenes there was this brave battle fought by this brave man. And that story just deeply resonated, because every time we have watched the tragedy, the travesty of that terrifying massacre, you know, we felt the pain, we felt the anger, we still feel the anger. Because what makes us all angry, and that's what came through in this beautiful screenplay, was the fact that there isn't an apology even now. No one has apologized, neither the crown, nor the monarchy, nor the British government. All of us, of course, know about the British Raj. We've come out of that valiantly as a country, but we, as a nation, are deserved an apology. And this film demands for just that. ऐसा है कि नमस्कार सारे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ आए, सुबह सुबह आए, और अनन्या पांडे भी आए, जोरदार तालियां उनके लिए। वैसे आपको बता दूं, वो शूटिंग कर रही थी और शूटिंग से सीधे आई है, सो आई कैन अंडरस्टैंड एंड थैंक यू वेरी मच अनन्या। वो भी हमारी फिल्म है, तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। अगर किसी और की भी होते तो भी क्या कह लेते। so, अच्छा, तो हम बात कर रहे थे जलियांवाला बाग। ये जो कहानी है, इट हैज़ अ वेरी स्पेशल मीनिंग टू मी। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ, अभी आप यहाँ फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि मेरे फादर अमृतसर से हैं, थे, और मेरे ग्रैंडफादर ने ये जो जलियांवाला बाग का पूरा हादसा हुआ था, तो उन्होंने इसे देखा है, और वो उस वक्त थे, और मुझे नहीं बल्कि मेरे पिता को बहुत कहानियाँ सुनाई थी इसके बारे में, और मेरे पिता ने मुझे सुनाई थी। तो ये जो कहानी है, मुझे बचपन से इसके बारे में बहुत कुछ पता है, तो इट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल थिंग विद मी। मेरे जहन में, मेरे दिमाग में ये हमेशा कहानी थी। तो जब मुझे करण त्यागी साहब ने मुझे कहानी सुनाई थी, तो उसी वक्त मैंने अपना फैसला कर लिया था और कहा था कि ये फिल्म ज़रूर करेंगे। तब एंड मैं करण जौहर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये फिल्म में मुझे दी और मुझे मौका मिला इसके अंदर काम करने का। When I read the script only, बहुत visceral reactions आ रहे थे, you know, everything was very emotional. बहुत सारे questions थे कि सच में ऐसा हुआ है। I'm not sure कि if they were arrested or no, पर जब हमने history में पढ़ा था, इतने सारे details कभी नहीं थे, you know. शायद एक death count दी थी, हमें पता भी नहीं कि वो right है कि wrong है, तो हमने briefly पढ़ी थी history में, पर when I read the script and when I heard the script, मुझे बहुत सीखने को मिला इससे। And I think जो सबसे important बात जो मैंने सीखी वो है कि as the younger generation, हम freedom को बहुत lightly लेते हैं, you know, we believe कि हाँ हमारा हक है, as we've grown up, we've been given freedom for everything. But when I read this script and I was a part of this film, मुझे वो weight लगा, you know, जो sacrifices
हम हमारी फ्रीडम के लिए जो पहले लोगों ने किया था, I really felt the weight of that, and I really understood that, and I don't think I'm the same person after being a part of this film. I want to tell you that not just as an Indian, not just as a humanitarian, but just as anyone who has even an iota of empathy or an iota of humanity within yourself, it will anger you. I don't want to mince my words. I don't want to be diplomatic in my answer. And I certainly don't want to beat around the bush when I say, how ridiculous was she to say that? And how dare she? She was calling those thousands of people looters. They were innocent people who conglomerated there, right there, on that was what was meant to be an auspicious day of Baisakhi, thinking something else was going to be the eventuality of the day, and look what happened. By admission, General Dyer has said that he only stopped shooting when the bullets ran out. And she went on in that interview to say that he loved India and all kinds of things, and how that he had the greatest compassion. What love can you have in your heart when your actions only spoke of hate? And the fact that she is living in a la la land of her own and is in some delusion of her own, and I don't know her, haven't met her, and I don't wish to meet her. But the fact that she even said those things just makes me so angry on a humanitarian level. खून खौलता है जब मैंने वो वीडियो देखा कि the fact that she had such disdain for one of the biggest genocides in the history of our nation and the history of the world, and the fact that she was so disdainful of it made me just angry, made me want and demand an apology even more. क्रिटिसाइजिंग मुझे नहीं लगता है किसी ने क्रिटिसाइज किया है वो फिल्मों को। कोई बेवकूफ़ी होगा जो क्रिटिसाइज करेगा। जैसे फिल्म बनाई है मैंने, पैडमैन बनाई है, आप ही बता दीजिए। जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा है, एयरलिफ्ट है, केसरी 1 बनाई थी, केसरी 2 है, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस फिल्मों को क्रिटिसाइज करेगा। मैंने अपने दिल से बनाई है, और एक फिल्म है जो कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताती है, समझाती है। कोई भी फिल्म हो, तो मुझे नहीं लगता किसी ने क्रिटिसाइज किया है। वन नेशंस ट्रॉमा इज अदर नेशंस लेसन। दैट इज व्हाट शी नेवर अंडरस्टूड। दैट्स व्हाई शी कीप्स ऑन टेलिंग हिस्ट्री है, हिस्ट्री भूल जाओ, खत्म हो गई। I don't think so. She has understood the lesson also, what has gone through it. As what Karan has said, it's absolutely, I appreciate it, and the way he said it also is absolutely right. And you will see that whole thing, the anger, by the time the film comes to the climax, you will understand how much anger there was. And I would rather say that you watch the film to see the anger. Because जैसे अनन्या ने कहा कि freedom, उसका value उन्हें ज़्यादा थी, हमें इतनी नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते वो चीज़ बढ़ रही है इस युवा के अंदर, इस पीढ़ी के अंदर बढ़ रही है। जैसे जैसे मैं देखता हूँ, कभी कभी मेरे सोशल मीडिया के फीड पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो देशभक्ति के काफ़ी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन उस वक्त जो था, उस वक्त इफ आई वुड से 10 आउट ऑफ 10 था। लोग जो जितनी परसेंटेज लोगों के अंदर वो था कि हमें किसी भी हालत में, हमें कैसे भी करके फ्रीडम हासिल करनी है। तो उस टाइम वैल्यू फ्रीडम की बहुत थी। अब आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जा रही है। लोग समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। That's it. वो तो वहाँ था उस वक्त, तो फिर भी हमारे हाथ में कुछ नहीं था। इस वक्त तो हमारे साथ सामने, और हमारे देश के कोर्ट्स हैं, पुलिस हैं, आर्मी हैं, तो वो जो वो करेगी हालत, वो देखने लायक भी नहीं होगा। I think lots of things will change. I'm not here with a begging bowl to say they should say sorry, but I want them to at least watch this movie and realize the mistake. Baki, the next other things will flow automatically from their mouth, because it is bound. The apology is bound to happen. It will flow on its own. But I just want them to watch this film. That is what I want. The British government to watch the film. I want King Charles to watch the film. Then they should see it. What happened. I'm not saying, but the rest will follow automatically.
I think that this is actually the beginning of our distribution arm, as Dharma Distribution's first Hindi film will start. And I think that there can't be a better beginning. Of course, we realize we're cognizant of the times and we know. But you know, I have a feeling that when a film is this powerful and has this kind of intensity and this kind of communication to an audience, we keep putting films into boxes. ये multiplex की film है, ये single film की picture है, ये tier 1 की film है, tier 2. हम सब सोचते हैं कि हम सब समझते हैं और हम सब जानते हैं. एनालिस्ट्स बहुत हैं, कम्युनिकेट करने वाले बहुत हैं, सोशल मीडिया में सबकी ओपिनियंस हैं, एंड आई रिस्पेक्ट देम ऑल बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेटिक नेशन. बट आई वांट टू से किसी को कुछ पता नहीं कि उस फ्राइडे पे क्या होगा. ओनली एन ऑडियंस विल डिसाइड. ऑडियंस ही राजा और ऑडियंस ही मालिक और ऑडियंस ही सब कुछ. तो हम जितने भी स्ट्रैटेजी बना ले, वो फ्राइडे सब कुछ बदल सकता है. And I'm quite sure ये Friday सब कुछ बदलेगा. To say that there is one particular scene, I won't tell you which one, no spoilers here. There's one particular scene that Ananya has shot 4 times. Yeah. Not because of her, because the scene kept evolving and changing. And just to show that the instinct of an artist is so strong that what is in the film is the very first time she shot it. Yeah, the original So one. the second, third, and fourth time was a little bit of her time that may have been wasted. It's all right. And we apologize. Yours too, you're in the scene.